ठीक है. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा है, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द इनामल. ओके. तो मेन कॉम्पोजिशन क्या होता है, द इनामल ऑफ द टूथ इज मेड अप ऑफ अ कैल्शियम सॉल्ट. ओके. और वो कैल्शियम सॉल्ट का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट. Okay, so and this is the molecular formula of the compound Ca5PO4 thrice OH. Okay, so what are the different compound or the salt present in this? एक कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट. सेकेंड कौन सा होगा, फ्लोरोहाइड्रोक्सीपेटाइट. Okay, and some other minerals. Okay, so these two salts are present in the enamel of the tooth or the teeth, which makes it very strong. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. The two different salts of the enamel. Okay, और एक यहाँ पे क्या दिया है कि टूथ डिके, जो आपने बहुत बार सुना होगा कि कैसे होता है ये. सो समटाइम्स क्या होता है कि ड्यू टू सम काइंड ऑफ केमिकल अटैक, ओके, और सम काइंड ऑफ माइक्रोबियल अटैक, क्या होता है कि योर इनामल ऑफ द टीथ स्टार्ट गेटिंग डिट्यूटेड. उसको क्या कहते हैं, टूथ डिके. और कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स द पल्प कैविटी, देयर इज सम इन्फेक्शन इन द पल्प कैविटी, उसको क्या कहते हैं, डेंटल कैराइटिस. So these are the two different disorders related with the tooth. Okay, so if possible you can remember these two names, और salt का नाम क्या है वो आप लोग याद कर सकते हो. Okay, okay, fine. ये clear है इतना? Yes, sir. So this is I think so. Okay, this is a summary which you will. Okay, so the now next subtopic will be what? The different layers of the elementary. अच्छा, सो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक और स्ट्रक्चर जो अपने बकल कैविटी के अराउंड प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है, द नेम ऑफ दैट इज व्हाट, सलाइवरी ग्लैंड. एंड आपको ये पता होना कि सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट्स सलाइवा व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च, है ना, एटलीस्ट ये सबको पता है. ठीक है, सो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, और वो कैसे केमिकल, मतलब उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है सलाइवा का. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सो देर आर थ्री डिफरेंट pairs of the salivary gland is present. Okay, the first one is called as submandibular, second one is called as sublingual gland, and the third one is called as what, parotid gland. ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये अपना ये जो है ना स्किन एंड मैसेटर मसल, जो अपने ईयर लोब्स के अराउंड जो प्रेजेंट होता है, सो इट इज प्रेजेंट लाइक हियर. Okay, or and this submandibular gland is present in just below the lower what we can call like the lower jaw. और ये जो है this sublingual gland, it is present in this just below the tongues. Okay, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है. So these are the three different types of the salivary gland. Okay, and remember this image, this is very important. तो ये क्या है, this is the parotid gland, which is the largest salivary gland. Okay, then this is the submandibular gland. Okay, and एक और gland है which is called as what, sublingual gland. Is it clear? So we have three different pairs of the salivary gland: parotid gland, submandibular gland, and third कौन सा है, sublingual gland. Is it clear? ये तीनों point clear? Yes, sir. But this, Yes, sir. there's chance that they will ask you this type of gland, but what they might ask you, that the tube which is arising from the parotid gland, okay, the tube which is pouring saliva from the parotid gland, and the name of that tube
is Stenson's duct. Okay, so what is Stenson's duct? It is a tube-like structure or the duct which is pouring saliva from the parotid gland from upper side into the buccal cavity. ये clear है? So this Stenson's duct will pour the saliva from the parotid gland inside the buccal cavity. And there is one more duct that is called as Wharton's duct. Okay, so what you have to remember along with the name of the salivary gland, the two different ducts which is present. Actually, there are three different types of duct. You can see one duct which is pouring saliva from the parotid gland is called as Stenson's duct. One duct which is pouring saliva from the submandibular gland is called as Wharton's duct. Okay, and there is one more duct which is like normal. They have not given very special name to this. So this duct is called as what? Sublingual duct. Okay, so along with the three different pairs of the salivary gland, we have three different ducts also. Okay, and what is the main function of the duct? Definitely to deliver or to pour the saliva from their respective gland into the buccal cavity. Okay, so is it clear? यहाँ तक समझ में आया? But important क्या है? The name of the duct. Stenson's duct arises from the parotid gland. Wharton's duct arises from the submandibular gland, and the sublingual duct arises from the sublingual gland. Okay, यहाँ तक clear है? समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. This is a new like this is I think so this would be a new concept ना. Yes, Stenson's duct, Wharton's duct for you. But ठीक है, try to remember this. Submandibular gland से कौन सा duct आता है? Wharton's. And Stenson कहाँ से आता है? Parotid gland से. Okay. उसके बाद next क्या है? The different functions of the or the composition of the saliva. तो एक सबसे important क्या है? This saliva almost contains mostly it contains what 99.99 99 to 99.5% is what? It is water. It contains about 99% water, and the remaining 1 to 0.5% includes different kinds of organic compounds. जैसे कि इसमें यूरिया भी होता है. Inorganic compounds like there might be some kinds of minerals and salt. Okay, that also present. इतना clear है? 99% water and remaining percent includes organic and inorganic compound. Organic में कौन सा आता है? It may includes the glycoprotein. Okay, you can see this third point. Organic factor में क्या आता है? The glycoproteins, some enzymes like the lysozyme which helps in killing microbes which is trying to enter from the food. Okay, so that lysozyme is also present in the saliva. That is why saliva has also some antimicrobial property. याद रखना. Okay, saliva also has some antimicrobial property. And definitely एक enzyme होता है salivary amylase and the second enzyme is lingual lipase. But ये जो है this lingual lipase is actually it activates when it enters inside the stomach. Okay, so salivary amylase का function क्या है? Definitely we know that is it converts starch into maltose. Okay, this we will learn when we will study the mechanism of digestion and absorption. But इतना clear है? Yes. Yes, sir. And what you have to remember? It also contains antibody, and the name of that is what? Antibody A, or immunoglobulin is also present. So along with the lysosome, antibody A or the immunoglobulin A is present, which makes saliva as antimicrobial in nature. And that is why whenever we have a cut, what we apply, we apply saliva. Because their saliva contains antibodies and the lysosome. Okay, ये clear इतना? And saliva के पास कुछ और chemicals होता है, which is again very important, like interesting. If you just this point, क्या दिया है? Saliva also contains epidermal growth factor. ठीक है, this is a chemical which promotes the development of the epidermis or which promotes the development of some skin tissue.
Okay, so which might have given rise to the adage, a mother's kiss can heal a wound. Definitely. Why? Because mother's kiss contains saliva, it contains a growth, epidermal growth factor. So for me, I think so. This is very important point, very scientific. You know, you might have heard the mother's kiss can heal a wound. So what is scientific evidence? Because it contains some kind of epidermal growth factor and some antibodies. Okay. Is it clear? Yes, sir. Perfect. Chalo, फिर next क्या है? So this was about the composition of the saliva. Okay. Then next is what? Different salivary glands secretes different types of saliva. Okay. Just a second. Till then you can read. Okay. Okay. You all can read. I'm coming. ओके तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज देखो इसमें क्या होता है कि वी नो दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड तो ये एक क्वेश्चन आता है कि मतलब व्हिच ग्लैंड इज मोर फंक्शनल व्हिच ग्लैंड सेक्रेट्स मोर सलाइवा एक ये नॉर्मल क्वेश्चन आता है ना तो ये जो नॉर्मली ये जो ग्लैंड होता है ये अपना पैरोटिड ग्लैंड सो इन नॉर्मल कंडीशन लाइक जब अपना कोई मतलब कोई ऐसा काइंड ऑफ क्या उसको कह सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में ये जो है ये दिस वन सब मैंडिबुलर ग्लैंड ठीक है this submandibular gland under unstimulated condition it secretes 70% of the saliva मतलब जब कोई स्टिमुलेशन नहीं है जब कोई एक्टिविटी नहीं है तो ओके तो ये क्या secrete करता है almost 70% of the saliva but जब when we receive any kind of stimulus like any kind of flu any kind of image of the food then what happens our salivary gland which parotid gland becomes active then it will secrete more than 50% of saliva yes are you getting this समझ में आ रहा है कि नहीं Yes, sir. ओके बट एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है सबसे थिकेस्ट सलाइवा सबसे थिकेस्ट सलाइवा कौन सेक्रेट करता है सबलिंगुअल ग्लैंड ओके दिस सेक्रेट्स वन ऑफ द मोस्ट थिकेस्ट सलाइवा और सबसे सबसे थिन सलाइवा कौन सा सेक्रेट करता है सबसे थिकेस्ट कौन करेगा सबलिंगुअल ग्लैंड ठीक है इतना क्लियर है Yes, sir. डाउट यहाँ तक किसी कुछ डाउट है सो दिस वाज अबाउट द फंक्शन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड एंड द सलाइवा यहाँ तक पूरा क्लियर है Excuse me, sir. बताओ Sir, yes tell me hello I'm not able to hear आप कुछ बोलना चाहती हो हेलो छोड़ दो सर आप आगे बढ़ें okay fine चलो sir, can you hear me? yes now I can hear you Yes. Okay, sir. I was just curious. Okay, why do they secrete different types of saliva? Like they can secrete same, na? The difference. yeah Sanya this is very good question why they secrete different types of saliva because even saliva has a different function जैसे मान लो कि normal condition when like we are not hungry or there is no stimulation of the food so we need saliva to keep our mouth moist na so to keep our mouth moist we have to secrete saliva but that saliva should not be very thick agar thick hoga then we will have some problem in talking some in producing voice okay so that is why like the different kinds of glands secretes different kinds of saliva so that is one reason because what is main purpose to keep our mouth or to keep our buccal cavity what we can call like to moist okay
and then accordingly what will happen, like if we are eating, then at that time we have to secrete a saliva which contains more amount of enzyme and thing. Okay, so as we there are different function of the saliva, so that is why we have different composition of the saliva. Okay, Sania? Okay, sir. Thank you. Yeah, good. So the next subtopic is what? This the histology of the alimentary canal, which is one of the difficult subtopic to understand. Okay, and what do we learn in this? Like what we learn in this histology of the alimentary canal? We learn that what are the different layers of the alimentary canal present in it. Okay, so this is what you have to remember. Ready to start with this new? Yes, sir. Okay. So moving, what I have given here? Moving from lumen. Okay, this is very important. Moving from lumen to outward. Like for example, if I draw this circle, okay. If I draw this circle, and if this represents the transverse section of the alimentary canal, so this red one, which is the innermost, will be of what? Will be the mucosa, followed by the submucosa, something like this. Okay, then we will have muscularis, something like this. Okay, then we will have serosa. Okay, so this alimentary canal, if I draw this alimentary canal, I hope you know this is a tube-like structure. Okay, so if I try to take a transverse section, then I can see something like this. Okay, so the innermost layer is what? Mucosa. Okay, mucosa, and the outermost layer is what? Serosa. And in between these two layers, submucosa is present. So this yellow color will be what? Submucosa. Okay, and this will be what? Muscularis. Okay, is it clear? यहाँ पे clear है? Yes, sir. Four different layers will be mucosa, submucosa, muscularis, and serosa. And now I will show you कि हर एक का structure and function कैसा होता है. But is it clear? Is this clear? Yes, sir. Chalo, फिर next we'll move to the next. Is this submucosal plexus? This is quite complicated, but if you see closely, then you will understand. This is a common, like this is an alimentary canal or tube of the alimentary canal. Okay, then we have taken a transverse section. So this innermost layer will be what? Mucosa. Ye clear? First look at this. Okay, this innermost layer is what? Mucosa. And this mucosa is made up of three different layers: epithelium, lamina propria, and muscularis mucosa. Why do we call this muscularis? Because this is made up of different types of muscles. Okay, so that is why it is called as what? Muscularis. Epithelium Q, because it is covering the alimentary canal from the internal side. And lamina propria is a specialized, it is made up of lymphatic vessels, which plays very important role in developing or in maintaining the immunity of the GI tract. So ye clear hai? This mucosa is the inner part of the or innermost layer of the alimentary canal, which is made up of three different layers: epithelium, lamina propria, muscularis, mucosa. Is it clear? Yes, sir. Yes. Anyone has a doubt in this? Because this is slightly difficult to understand, but समझ में आ रहा है? Yes. Understood, yes, sir. Yeah, good. Next यहाँ पे क्या है? This mucosa, which you can see, and after this there is one more layer, which is called as submucosa. देख रहे हैं? This.
Let me use a different color. Okay. So this particular layer is what? Submucosa. And why do we call this as a submucosa? Because this is what easy, na? Because this is present just below the mucus. So that is why it is called as what? Submucosa. Sorry. Itna clear hai? हाँ सर. Mucosa is present just below the mucosa. That is why it is called as submucosa. But important क्या है? Mucosa is followed by the muscularis. Okay, तो muscularis में, and why do we call this the muscularis? Because इसमें दो टाइप के मसल्स होते हैं, and you all have to remember this. ऐसा नहीं कि मतलब कुछ difficult है या फिर कुछ complicated है. I think so this is quite simple ना. दो टाइप के मसल्स होते हैं, circular muscle and longitudinal muscles. दोनों का फंक्शन क्या होता है? To help in the creating peristalsis movement. Okay. Is it clear? देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि after the death of a person, the length of the alimentary canal increases. Yes, I have told you, na? Yes, sir. So why it is? Yes. Because of the relaxation of these muscles. Okay, so muscularis layer is made up of two different types of layers. Circular muscle. Okay, circular muscle, and why do we call it a circular? Because के जो stand होते हैं, they look quite like a circular. ठीक है, और एक और कौन सा होता है? लॉन्जिट्यूडिनल मसल. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि इसमें जो है मस्कुलरिस में दो टाइप के मसल्स होते हैं, सर्कुलर, लॉन्जिट्यूडिनल. इतना क्लियर है? Yes, sir. yes. और उसके बाद एक लास्ट वाला जो है सेरोसा, विच इज द आउटर मोस्ट. और ये जो सेरोसा होता है ना, एक्चुअली ये किसके साथ कनेक्टेड होता है? मेसेंट्री के साथ. मतलब कि ये आप देख रहे हैं, ये येलो कलर का जो कुछ आपको दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस, है ना? तो ये इसके साथ अटैच होगा, मेसेंट्री के साथ में ये सब जो क्या होता है, दिस सेरोसा विल बी अटैच्ड. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल लेयर इसमें कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल का म्यूकोसा. दिस म्यूकोसा कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फूड. ये भी बात आपको याद रखना है. ओके, दिस इज अ बेसिक information. Which part of the or which layer of the alimentary canal comes in the contact with the food? कौन सा layer आता है? हाँ बताओ. म्यूकोसा. है ना? तो अब डेफिनेटली देखो, एक मैंने आपको बताया कि जैसे ये जो लैमिना प्रोप्रिया होता है, इसके पास बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, और लिम्फेटिक वेसल्स का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड इम्यूनिटी. क्यों इसको इम्यूनिटी चाहिए? कोई मुझे बता सकता है रीजन दैट व्हाई mucosa needs special lymphatic vessels, or why mucosa needs mucosa associated lymphatic tissue? Why it needs? इसके पीछे कोई scientific reason हो सकता है क्या? बताओ क्यों चाहिए? Why do we need any type of immune system inside the mucosa of the alimentary canal? क्यों चाहिए? So because food is in contact with it, so bacteria and all foreign particles. यस डेफिनेटली, है ना? ये सबसे बड़ा लॉजिकल आंसर है, क्योंकि म्यूकोसा के अंदर मतलब डेफिनेटली फूड होगा, एंड फूड में कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस व्हिच मे कॉज डिसीज, है ना? तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, टू मेंटेन द हेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दिस म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? माल्ट कहते हैं, एंड दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द लैमिना प्रोप्रिया. ये आपको याद रखना है. लैमिना प्रोप्रिया कंटेन्स म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, जिसको ये डायग्राम में अगर आप देखोगे ग्रीन करके स्ट्रक्चर में उसने ड्रॉ करके बताया. सो दिस इज माल्ट व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द लैमिना प्रोप्रिया ऑफ द म्यूकोसा. क्लियर है इतना? यस यस सर. तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? 4 different types of layers are present. So if we are if we try to count from inner to outer side, तो सबसे inner side में कौन सा होता है? Mucosa. Mucosa. Then submucosa. Okay. Second कौन सा होता है? सबम्यूकोसा. फिर थर्ड कौन सा होगा? Muscularis. 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 एंड सबसे बाहर कौन सा होता है? सेरोसा. ओके, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद जो है अपना ये देखो, ये आर्टरी वेन्स, तो डेफिनेटली ये किसमें हेल्प करते हैं? मतलब टू ड्रॉ
they absorb nutrient from the alimentary canal, है ना. ये जो है veins जो है ना, assume करो कि ये vein किस में जा रहा है, liver में जा रहा है, hepatic portal vein form करेगा. तो जो कुछ भी absorb होता है वो alimentary canal से कहाँ पहुंचता है, vein के through liver में जाएगा, फिर liver से कहाँ जाता है, दूसरे body parts में जाता है. और ये जो है ना lymphatic vessels, एक होता है lacteals, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा. lacteals जो होता है वो किसमें हेल्प करता है, फैट के ट्रांसपोर्टेशन. बट यहाँ तक क्लियर है, 4 different layers of the alimentary canal and its function. ठीक है. Yes sir. फंक्शन को मैंने यहाँ अब एक स्टेटमेंट के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, मेंशन किया है. तो सबसे पहला फंक्शन देखो, म्यूकोसा के पास 3 लेयर होते हैं, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस. एपिथेलियम जो होता है उसमें एक सेल होता है, उसका नाम क्या है, गॉबलेट सेल. गॉबलेट सेल. और ये जो गॉबलेट सेल है, दिस इज द यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं इसको, या फिर एक ऐसा ग्लैंड है जो क्या सेक्रीट करता है, म्यूकस. तो अपने इसमें एलिमेंट्री कैनाल में जो भी म्यूकस होता है वो कौन सेक्रीट करता है, गॉबलेट सेल. और बहुत सारे एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो बहुत तरह के हार्मोन सेक्रीट करते हैं. बट अगेन इफ पॉसिबल आप सिर्फ 1 या 2 हार्मोन्स के नाम अगर आप याद रखते हो, दैट इज आल्सो सफिशिएंट. जैसे एक हो गया कोलेसाइटोकाइनिन, सोमैटोस्टैटिन. तो ये कुछ हार्मोन्स है which is secreted by the enteroendocrine cells. मतलब इन शॉर्ट एपिथेलियम में एटलीस्ट 2 स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसका फंक्शन क्या है, कुछ सम काइंड ऑफ सिक्रीशन. जैसे गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस. एंटेरोएंडोक्राइन सेल क्या सिक्रीट करता है, सम काइंड्स ऑफ हार्मोन्स which helps in the digestion of the food. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? Yes. Yes sir. Okay, please be honest. Clear है? Then I will read all this point. यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर. चलो अच्छी बात है. फिर अगला कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, लैमिना प्रोप्रिया. जैसे आपको पता है कि यहाँ पे माल्ड होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. और इसका मेन फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी. ओके, क्यों इम्यूनिटी, बिकॉज के पास क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स है. न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट क्यों करेगा, बिकॉज उसके पास क्या है, ब्लड वेसल्स है. ठीक है, ये दोनों काम करता है लैमिना प्रोप्रिया. जैसे माल्ट किसमें हेल्प करेगा, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फॉरेन पैथोजन. ठीक है, ये क्लियर है इतना? Yes sir. और एक ये जो नेक्स्ट है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, इट क्रिएट्स रुगे फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. ये पता है ना रुगे क्या होता है, जैसे सपोज इफ दिस इज अ एलिमेंट्री कैनाल, देन इसके अंदर बहुत सारे ऐसा इनफोल्डिंग्स होते हैं, है ना, व्हिच इज कॉल्ड एज रुगे. तो रुगे कौन फॉर्म करता है, दिस मस्कुलरिस म्यूकोसा. देखो आपको पता था कि आफ्टर द डेथ अगेन वो सेम कॉन्सेप्ट, लेंथ इंक्रीज क्यों होता है, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ये रुगे बना होता है, दे आर इन द कॉन्ट्रैक्टेड फेज टू फॉर्म द रुगे. तो मस्कुलरिस म्यूकोसा क्या फॉर्म करता है, दे फॉर्म द रुगे फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. इतना क्लियर है? थर्ड पॉइंट, इज दिस क्लियर? Yes. And the second last is very easy, na? Submucosa, it is present between the mucosa and the muscularis. And the last one is what? Muscularis का main function क्या होता है? The muscularis in the small intestine is made up of 2 different vessels. The outer layer is called as longitudinal and the inner layer is called as circular. मतलब again जैसे आपको बताया था मैंने कि 2 टाइप के layers होते हैं, एक होता है longitudinal, एक कौन सा होता है, circular. ठीक है, और ये दोनों के जो मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो किसमें हेल्प करते हैं, प्रमोट्स द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड. अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो मसल्स होंगे लाइक ये स्केलेटल मसल्स होंगे या फिर स्मूथ मसल्स होंगे? ये कौन से टाइप के मसल्स होंगे, स्केलेटल मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स? Smooth muscles. Exactly, smooth muscles ना, ये common logic है because the contraction and relaxation of this is not in our will. तो
throughout the alimentary canal, ये आपको बात याद रखना है, throughout the alimentary canal 2 layer is present only. Okay, one is longitudinal layer, एक और कौन सा होता है circular layer. But stomach is a highly muscular and it has to store food, and इसका एक और function क्या होता है, churning of the food ना, आपने सुना होगा stomach में ऐसा churning में ऐसा मतलब कि move करता रहता है. So to aid the churning of the food, मतलब to help in the churning of the food, एक और muscle होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है. सो दिस ऑब्लिक मसल इज एक्सक्लूसिव टू द स्टमक. समझ में आ रहा है इतना? यस, बताओ यार. हाँ सर. दिस और नॉट? हाँ, क्लियर है इतना? यस. वाह. चलो, फिर एक लास्ट पॉइंट कौन सा है? इन द माउथ pharynx anterior part of the esophagus and the external anal sphincter, the muscularis is made up of skeletal muscle which gives us voluntary control over swallowing and defecation. देखो, मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि इंटेस्टाइन में small intestine, large intestine, stomach, esophagus, some part of the esophagus, some part of the pharynx, some part of the rectum, anum. तो मतलब उसमें क्या होता है कि muscles, these muscles are what? Smooth muscles. But esophagus का जो कुछ part होता है, anterior part of the esophagus, external anal sphincter, ये important है, ठीक है? दोनों कौन से मसल से बने होते हैं? स्केलेटन. एंड दैट इज व्हाई यू कैन कंट्रोल द थिंग्स व्हिच इज ट्राइंग टू एंटर इन योर माउथ एंड द थिंग्स व्हिच इज ट्राइंग टू मेक एग्जिट फ्रॉम योर एनस, है ना? सो दिस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डिफिकेशन एंड स्वेलविंग ऑफ द फूड. ये क्लियर हुआ इतना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, बताओ. एंटीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस वाला नहीं समझा. एंटीरियर पार्ट देखो, जहां पे ये अपना फेरिंग्स, पता है आपको? फेरिंग्स के बाद जो आता है सबसे आगे वाला पार्ट, ये मैं बताता हूँ, एक मिनट. ये अपना था ईसोफेगस ना, कहाँ पे गया? We have crossed. देखो, ये है ईसोफेगस. ये तो आपको पता है कि ये ईसोफेगस है. तो हाँ सर. पार्ट होता है ना ये वाला. देखो, आपने कभी ऐसा इमेजिन देखा होगा ना कि इफ यू आर च्यूइंग गम, है ना, तो अगर च्यूइंग गम यहाँ तक है देन यू कैन कंट्रोल स्वेलविंग. बट एक बार च्यूइंग गम यहाँ से यहाँ पहुंच गया देन कैन यू कंट्रोल द स्वेलविंग? नो. है ना? सो इट मींस दैट दिस रीजन इज मेड अप ऑफ skeletal muscle which is anterior part of the what we can call, which is anterior part of the esophagus. और इसके बाद कौन सा मसल्स होता है? स्मूथ मसल्स. समझ में आया? एंड सेम थिंग फॉर द एनस. जो एनस के यहाँ पे जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, एंड दैट इज व्हाई वी कैन कंट्रोल द डिफिकेशन. है कि नहीं? नाउ अभी समझ. एंड जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ दैट मसल बिकम स्मूथ, है ना? तो कितना ड्रास्टिक हो जाता है ना? सो दैट इज व्हाई दैट इज नॉट अबाउट स्मूथ मसल्स. वो किससे बना है? स्केलेटल मसल्स. ओके, यस, समझ में आया? यस. चलो, अगेन मीटिंग का टाइम हो गया, लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट. सो आप अब फिर से ज्वाइन कर लो, फिर देन वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट. ठीक है? ओके, चलो मैं एंड एंड हम लोग फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे.